हेलो एवरीवन, आज हम लोग जेईई मेंस 2020 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वर्क पावर एनर्जी से है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पार्टिकल ए ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी √3 i cap plus j cap meter per second collides with another particle b of mass m2 which is at rest initially। दिया है कि पार्टिकल ए का मास m1 है और मूविंग विथ वेलोसिटी √3 i cap plus j cap. It collides with another particle b of mass m2। एक दूसरे पार्टिकल b के साथ ये कोलाइड कर रहा है जिसका मास है m2 और वो इनिशियली रेस्ट पर है। तो बेसिकली जो पार्टिकल a है वो पार्टिकल b के साथ कोलाइड कर रहा है। ये √3 i cap प्लस j cap मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है और ये रेस्ट पर है। ये इसके साथ कोलाइड करता है। कोलाइजन के बाद ये लेट v1 and v2 be the velocities of particles a and b after collision respectively। तो कोलाइजन के बाद ये जो दोनों पार्टिकल्स है ये अलग अलग मूव करते हैं, यानी ये एक इनइलास्टिक कोलाइजन है, मतलब इलास्टिक कोलाइजन है, ये एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं। If m1 is equal to 2m2, इस पार्टिकल का मास है m1, इस पार्टिकल का मास है m2, तो बोल रहे हैं कि m1 is equal to 2m2 and after collision v1 is equal to I cap plus √3 j cap। The angle between v1 and v2 is, so we have to find out the angle between v1 and v2। For particle A, mass is equal to m1, u is equal to u1 is equal to √3 i cap plus j cap। Particle B, m is equal to m2 और u2 is equal to 0। इसमें हमारे पास v1 दिया है i cap प्लस √3 j cap। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेसिकली बोलता है कि कोलाइजन के बाद और कोलाइजन के आफ्टर जो मोमेंटम है वो इक्वल रहेगा। द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलाइजन विल स्टे इक्वल। m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। m1 into u1 √3 i cap plus j cap plus 0 because u2 is 0 is equal to m1 i cap plus √3 j cap plus m2 v2। m1 is 2 m2, 2 m1 2 m2 √3 i cap plus j cap is equal to 2 m2 i cap plus √3 j cap plus m2 v2। We will factor out m2 and it will get cancelled. So 2 √3 i cap plus j cap is equal to 2 i cap plus √3 j cap plus v2। So we have v2 is equal to 2 √3 i cap plus 2 j cap minus 2 i cap plus minus 2 √3 j cap। When we simplify it, we will get 2 √3 i cap plus j cap minus 2 √3 i cap
plus j cap. Sorry. 2 root 3 minus 1 I cap minus 2 root 3 minus 1 j cap. So this is the value of V2. V2 is equal to 2 root 3 minus 1 I cap minus 2 root 3 minus 1 j cap. Now, whenever we want to find out the angle between V1 and V2, we use a formula which states that cos theta is equal to A into B. Let A and B be the two vectors. A into B by magnitude of A into magnitude of B. In the numerator we do dot product. A into B, it is called the dot product. In the dot product, we basically I cap is multiplied by I cap and j cap is multiplied by j cap. मतलब I cap से multiply होता है और j cap से multiply होता है. एक और टाइप का प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स में जिसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट में जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर आता है. क्यों? क्योंकि जब हम आई कैप से आई कैप इंटू करते हैं और जे कैप से जे कैप मल्टीप्लाई करते हैं तो आई कैप और आई कैप मिलकर स्क्वायर हो जाता है और आई कैप का स्क्वायर होता है 1. तो इसलिए हमारा आई कैप और जे कैप कैंसिल हो जाता है, हमारे पास सिर्फ स्केलर्स बचता है. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास फाइनल रिजल्ट एक वेक्टर ही होता है, मतलब आई कैप और जे कैप के फॉर्म में होता है. एंड द डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ मच वन वेक्टर इज अलोंग द अदर. मतलब एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कितना है. इस जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है और क्रॉस प्रोडक्ट से हम ये पता निकालते हैं, हमें ये पता चलता है कि एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर से कितना परपेंडिकुलर है. तो बेसिकली यही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस था. और नीचे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी. A into B. In this case, we have V1 into V2. V1 into V2. Also, in cross product, we use the multiply sign, cross sign, and in dot product, we use the dot sign. V1 into V2 is equal to V1. We have I cap plus root 3 j cap. And V2 we have 2 root 3 minus 1 I cap minus 2 root 3 minus 1 j cap. 1 into 2 root 3 minus 1 I cap will be multiplied by I cap and root 3 into root 3 minus 1. So we have the dot product of one into 2 root 3 minus 1 and root 3 into minus 2 root 3 minus 1. There is a plus sign in between. 1 plus root 3 into minus 2 into root 3 minus 1. So minus 2 into root 3 minus 1 into root 3 plus 1. This is the
magnitude of V1 and V2, we have here we have minus sign, so here will be minus root 3 minus 1. So minus 2 root 3 minus 1 root 3 minus 1, it is equal to minus 2 root 3 minus 1 square. Magnitude of V1 is equal to, the formula for calculating magnitude of any vector is Vx square plus Vy square. Means the vertical component of the square of the vertical component of that vector and the square of the horizontal component of that vector. 1 plus 3 is equal to root 4 is equal to 2. This is the magnitude of V1. And in the magnitude of V2, we have 2 root 3 minus 1 square I cap plus 2 root 3 minus 1 square j cap. We will take 2 root 3 minus 1 square common and the square will be square root, so 2 root 3 minus 1 under root 1 plus 1, so we have 2 root 2 root 3 minus 1. So this is the value of magnitude V2, and the value of magnitude V1 we have calculated here, and the value of the dot product of V1 into V2 is minus 2 root 3 minus 1 square. Now all we have to do is put the values in the formula. Cos theta is equal to V1 into V2 by magnitude of V1 into magnitude of V2. V1 into V2 is minus 2 root 3 minus 1 square by magnitude of V1 is 2 into 2 root 2 root 3 minus 1. 1 root 3 minus 1 and 1 root 3 minus 1 will get cancelled, and this 2 and this 2 will get cancelled. So we will have minus root 3 minus 1 by 2 root 2. Multiplying with root 2 up and down, we get minus under root 3 into 2 minus root 2 into 2 into root 2 into root 2 is equal to minus root 6 minus root 2 by 4. Root 2 minus root 6 by 4, because we have the minus sign here और ये माइनस जब इंटू होगा तो हमारे पास रूट 3 माइनस रूट 6 बाई 4 हो जाएगा, और ये जो रूट 3 माइनस रूट 6 बाई 4 होता है तो हमारे पास फाइनली आया cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2 माइनस रूट 6 बाई 4. अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करते हैं. सो वी हैव थीटा
इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √2 माइनस √6 बाई 4, या अगर आप चाहे तो सिंपली cos थीटा इज इक्वल टू cos 105 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज √2 माइनस √6 बाई 4 इज द वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री is equal to 105 degree. So the answer of this question is theta is equal to 105 degree.